everyone. I just wanted to confirm if I'm clearly audible to everyone and you can see the slide as well. You can reply me through chat. Okay. So I'm getting a positive response. So let's all join us for an interesting session on commodities today. And I've been getting a lot of queries on the chat regarding crude oil and regarding gold. So maybe I'll just try and answer all the questions one by one. But first, I welcome you all to the seminar on commodities called Technical Perspective on the Commodities Market, the opportunities amid current volatility. My name is Amit Sajeja. I am a senior technical analyst here at Motilal Oswal for the last 6-7 years, almost 6.5 to 7 years. So I would like to throw some light on the current trends in commodities. What could be the way going forward? What has been the recent history? What are the interesting commodities to invest in? Or to trade in as well, both on the long and the short side, because you can do virtually both on the futures and option side. So it is going to be an interesting session. Some new concepts like gold silver ratio could also be discussed. Some of you might be familiar, but it might be new to a few people. So let's start with the session. So first, I'll start with gold itself, obviously, which is the king of the commodity market. And this is the spot gold chart on a monthly time frame. So as you can see here, it's spanning a lot of about 2 decades, I would say. So since the beginning of 2000, the year 2000 to 2020, it's almost a 20-year chart. As you can see here, what the prices here was about $254 per ounce. So what is 1 ounce? One troy ounce is about 31.035 grams. Right. So gold internationally is not quoted in kgs. It's quoted in dollars per troy ounce. And whatever rates you are seeing currently, so if currently it's around $1,650, that is $1,650 per troy ounce. And this is a spot rate. We also have the futures market in gold internationally. The biggest futures market is the COMEX-based market that's controlled by the CME group, Chicago Mercantile Exchange. So there, the turnover is very huge. It's a global futures and options market over there, and all the big players they trade in that market. Also, we have the spot market wherein banks are involved. It's a over-the-counter market. So both the markets go hand in hand, and our Indian gold prices are derived from futures prices or spot prices internationally. So we do need to look at these prices. As you can see here, this is a long-term channel. So a 20-year channel, and the price has generally been in an uptrend. There was a pause in between 2011 and 2016. There was a pause, but since then prices have begun to take off, more so in rupee terms. Even in dollar terms, we have seen a very decent appreciation. If you see in the last 3.5 years, we have gone from about $1,050 to $1,650 currently, which is about almost a 55 to 60% appreciation in the past 3 years. So pretty good rally. And as you can see here, there was some consolidation for some time between 1050 and 1360. But there were higher highs which are being formed and higher lows which are being formed. And eventually, we took this resistance off in about September 2018. And since then, we have been rallying to the upside. So what could be the outlook going ahead? Well, as I mentioned, that the trend has been positive with a slight, about a 4 to 5 year counter move. But there was a counter move, as you can see, during the 2007-2009 period as well. But the trend continued. So there was a counter move, and now we have again resumed the upside, so it seems. So what is the support going forward? Well, immediate support for the time being looks as if $1,450, which was the recent low which was tested about a month back. That is the immediate support, and major support would be seen at $1,360 as is seen on the chart, because that is a confluence of both the horizontal support line as well as the channel support now. So even the channel support somewhere comes between $1,380 to $1,360. So going forward, this is now a very important positional support. What could be the targets going ahead? Well, immediate target could be around $1,760. That's still a good $110 higher from here.
and eventually we might end up around close to the previous all-time highs of $1880. As you can see, there's an intermediate channel resistance over here, so that could be targeted shortly. So you can say that from a 1 year perspective from now on, we could see about $1880, which in percentage terms is still a good 18% from the current levels. So that could be the way going forward as far as spot gold is concerned. Now looking at the Indian prices, well, I've seen, I've plotted a more recent data, like it's been from 2012 onwards. We hit an all-time high, a prior all-time high of 35,074 in August of 2013. That was also when the rupee depreciated sharply. So rupee plays a very big part as far as gold prices are concerned on the domestic market. Because as you could see earlier, that in international gold, we haven't yet touched the all-time high levels, but in rupee terms, we have far exceeded the prior high. So the prior high in 2013 August was 35,000 or thereabouts. After that, we had a 2-year long consolidation, very similar to what happened in the international market. Prices declined by about 20 odd percent. But since then, we have just taken off. And since 2016-17 period, we have taken off. We saw a spike towards 32. And then since then, it's been a higher highs, higher lows kind of pattern, which has been evolving. As you can see on MACD also, the momentum indicator, it's been trading in a positive territory since quite a while now. So since September, October 2018, it's been on the higher trajectory, and the market has seen every dip has been taken as a buying opportunity. Last month, similar to COMEX or spot gold, we saw a sharp decline, or there was a sharp profit booking in gold, wherein prices fell from 45,000 to a low of 38,400 exactly. But then this was an intermediate channel support once again. As you can see here, an intermediate trend line is going, and on a weekly closing basis, the level was held. And we again have seen that we have rallied to fresh all-time highs of about 45,700 since then. Currently, we are around 45,000, 45,100 levels. So some correction has been seen in the last 2 days, but I believe very soon we can test immediate target of 46,200. That may be possible by next week itself, and over the next month or 1.5 months, 47,000 to 47,200, which is a potential channel resistance over here, as you can see on the chart, could be seen. So 47,200 could be taken as our intermediate target for the next 1 or 2 months, and buying at market is also advised. So anybody who's interested, after this seminar, after this webinar gets over, you can immediately go for buying gold. Shouldn't be an issue. The supports could be seen around 43,500. That's an immediate support, followed by lower support at 42,000, which we don't believe would be taken off in a hurry. So I think it's an all-out bull market. You can go ahead and buy gold even at these levels. Coming to silver then. Well, this is a very long-term chart for silver. Once again, this is a monthly chart similar to gold. So what is spot silver? Again, it's traded in within the banks, over the counter, and also in COMEX, which is the biggest silver futures trading exchange. MCX also trades a large number of silver futures, so there's no dearth of liquidity even here. So as you can see here, that we recently tested a potential long-term support around around $11. It was 10 point. It was 11.3 or 11.4 to be precise. So we tested that, and since then, the market has rebounded sharply. We are now close to $15.50. So there's already been about a 30% recovery from the lows because we tested almost the major support areas on the bottom. As you can see here, similar to gold, there's been an intermediate channel resistance here, which is coming around $16.5, but that's still a good $1 away from current markets, which means it's almost around 8 to 9% higher. So that could be the next target which you can look at. And once we take off $16.5, we could eventually head towards $21. But that's a very good resistance. So as of now, we don't expect much beyond that. $21 could be the eventual target which you could look into once gold starts to test $1,900 or $1,880 from a year's perspective.
but still from the current level, it's a pretty decent return. We are expecting from about $15.50 to $21. So that's about one third of the value itself. About 33% returns could be seen in silver over the next 1 year or so. So this calendar year could again be a very bullish year for both gold and silver. Coming to MCX silver, अगर हम देखें तो prices have recovered quite well. हमने देखा है कि 33,000 33,500 के सपोर्ट्स थे, तो हमने काफी एक शार्प रिकवरी देखी है फ्रॉम दीज लेवल्स एंड रिसेंटली टेस्ट हुए थे, क्योंकि 49,500 टू 50,000 का जो जोन था वो काफी क्रिटिकल था, वो ब्रीच नहीं हो पाया था. So we have seen that there was a sharp fall, but from a larger perspective, अगर हम लोग देखें कि पिछले कई सालों में क्या हो रहा है, तो प्राइस हैज बीन कंसोलिडेटिंग. मतलब वो नीचे 33,500 33,000 को टेस्ट करती है, उसके बाद में तुरंत 50,000 की रैली आती है, then again it tests 36,000 and then again it's a rally, then again there's a fall. So I think this range is going to persist. मुझे लगता है कि ये जो रेंज है ये persist होगी. Eventually 50,000 रीटेस्ट होगा. इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं, इंटरमीडिएट टारगेट जो हम देख रहे हैं, वो है 45,000 टू 46,000, जो करंट मार्केट से भी जैसे सिमिलर टू कॉमिक्स में या स्पॉट में हमने देखा था कि $16.5 $16.5 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस है, जो अभी भी 8 या 9% ऊपर है. सिमिलरली एक सिमिलर टारगेट हमें MCX सिल्वर में आ रहा है जो 46,000 के करीब हो सकता है. Once this resistance is breached, एक बार ये रेजिस्टेंस निकल गया, तो हम देखेंगे कि सिल्वर प्राइसेस इवेंचुअली लगभग 50,000 के लिए रेडी हो जाएगी, विच इज द नेक्स्ट बिग ब्रेकआउट. अगर 50,000 निकल जाता है तो फिर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन होगी या एक रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन से प्राइस निकलेगी, एंड हम देखेंगे कि फिर देन नेक्स्ट बड़ा मूव जो होगा वो लगभग 63-64,000 का होगा. बट एज ऑफ नाउ वो व्यू नहीं है. एज ऑफ नाउ 50,000 के व्यूज हैं फ्रॉम अ 1 year perspective, which is still very decent enough. About 25% returns you can expect because the current price is about 43,000. तो 25% रिटर्न आप डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड अबाउट 30% रिटर्न्स आप स्पॉट सिल्वर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं as far as silver is concerned. So as you can see, even the momentum indicator, it has been gyrating, it has been moving up and down हो रहा है. तो हम देखते हैं कि 30 से 40 की रीजन में सपोर्ट मिलता है, एंड 70 से 75 के रीजन में जो इंडेक्स है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI फॉर शॉर्ट, उसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता है. सो इट्स बीन मोर ऑफ अ रेंज बाउंड मार्केट, एंड वी बिलीव वी कुड टेस्ट द अपर एंड ऑफ द रेंज वेरी सून. सो एट द बिगनिंग मैंने ये बताया था आपको कि कुछ नए कंसेप्ट्स कुछ लोगों के लिए भी हमें सीखने मिलेंगे. तो ये चार्ट शायद बहुत लोग फेमिलियर नहीं होंगे, बट ये गोल्ड सिल्वर रेशियो का चार्ट है. तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म चार्ट है. वंस अगेन ये पिछले 12 या 13 साल को एनकैप्सुलेट करता है. तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 2007-8 में या सॉरी 9-10 में अराउंड 30 तक गिर गई थी, एंड उसके बाद हमने एक कंसिस्टेंट रैली, एक कंसिस्टेंट अपमूव देखा है. तो व्हाट इज दिस बेसिकली, ये कैसे डिराइव होता है? हमने देखा कि स्पॉट गोल्ड का जो प्राइस प्रायर हमने देखा था वो है $1650, राइट, और स्पॉट सिल्वर का जो प्राइस है वो है अराउंड $15 या $15.5, डजंट मैटर फ्रॉम अ वेरी लार्ज पर्सपेक्टिव. तो हम जब स्पॉट गोल्ड को स्पॉट सिल्वर से डिवाइड करें तो हमें एक रेशियो मिलता है. तो वो रेशियो करंटली अबाउट 110 के आसपास है. सो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है. 1650 डिवाइड बाय $15 करेंगे आप, तो आपको 110 के आसपास के लेवल मिलेंगे. तो ये रेशियो वो इंडिकेट करता है, ये दिखा रहा है कि गोल्ड जो है पिछले 10 या 12 सालों में ज्यादा रैली हुआ है एज कंपेयर टू सिल्वर, विच कैन बी सीन फ्रॉम दीज चार्ट्स एज वेल. जैसे आप देखें कि पिछले 6 या 7 सालों में सिल्वर में काफी भारी डिक्लाइन आया है. इनफैक्ट रिसेंटली हमने मल्टी ईयर लोस टेस्ट किए, बट गोल्ड ऑन द अदर हैंड हैज बीन कंसिस्टेंटली रैलिंग. तो ये रेशियो बिल्कुल उसी चीज को डिपिक्ट करता है. और अब हम देख रहे हैं कि काफी सालों तक एक अप ट्रेंड चैनल में था. सो इट वाज इन एन अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, जहां पर वो रेंज के हाई टेस्ट करता था, उसके बाद फिर से लोअर एंड ऑफ द चैनल को टेस्ट करता था. बट इवेंचुअली दिस चैनल वाज टेकन ऑफ. जैसे आप यहाँ देखेंगे कि 86-87 का जब बैरियर निकल गया,
तो उसके बाद हमने ऑलमोस्ट वन वे रैली देखी है। इनफैक्ट रिसेंट हाइज जो है वो 127 के रहे हैं, उसके बाद हमने 108 110 तक के रिट्रेसमेंट देखी है। तो दिस इंडिकेट्स इट्स एट चैनल सपोर्ट राइट नाउ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे पहले चैनल के अंदर कन्फाइंड थी मूवमेंट, अब उस चैनल के बाहर आ गई है, तो वही चैनल अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ब्रॉडली फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव जब तक 108 के नीचे नहीं निकल पाता तब तक हम देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म करता रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि जब गोल्ड और सिल्वर दोनों में रैली आएगी तो गोल्ड में ज्यादा रैली आएगी एज कम्पेयर टू सिल्वर। सेकेंडली, अगर फॉल भी आएगा तो सिल्वर में कम मात्रा में आएगा, कम प्रोपोर्शन में आएगा, गोल्ड सॉरी सिल्वर में ज्यादा प्रोपोर्शन में आएगा, गोल्ड में कम प्रोपोर्शन में फॉल आएगा। सो बेसिकली गोल्ड विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म सिल्वर गोइंग अहेड, दैट्स द व्यू। तो इसीलिए अगर कुछ जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं या क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि शुड वी बाय सिल्वर एंड सेल गोल्ड, तो पिछले 2 महीनों से हमारा आंसर रहा है नो, यू शुड ऑलवेज प्रेफर टू बाय गोल्ड। सिल्वर भी आप बाय कर सकते हैं बट कीप मोर क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो रादर देन सिल्वर। तो इवन नाउ आई वुड एडवाइज दैट वी शुड कंटिन्यू विद द सेम, बिकॉज अगर आप इस रैली को देखें, ब्रेकआउट के बाद भी अगर वो सिमिलर एक प्रपोर्शन में बॉटम से अगर वो रैली कंटिन्यू होती है अबाउट 85% की, तो हम देखेंगे कि ये जो रेशियो की रैली एग्जैक्टली 80 से स्टार्ट हुई, हो सकता है कि हम 140 पे जाके लैंड अप करें। 140 का मतलब ये होगा कि ये पॉसिबल हो सकता है कि गोल्ड जो है वो सिल्वर को बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म करे। जैसे मैंने आपको बताया कि 127 रिसेंटली गया था गोल्ड और सिल्वर का रेशियो, तो तब गोल्ड ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया था, जहां पर लगभग $1705 के हाईज बने थे रिसेंटली, एंड सिल्वर उतना हाईएस्ट टेस्ट नहीं कर पाया था, अराउंड $19 के करीब जाके उसमें फॉल आ गया था। तो राइट नाउ बोथ आर लुकिंग इक्वली गुड, but I think both are looking good, but I think gold will continue to outperform silver from a larger perspective. So if there are any questions relating to that, this concept, we will discuss it in the Q&A session going forward. Let's move on to crude now. तो एक काफी लोगों को दिलचस्पी रहती है क्रूड में फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द कमोडिटी इटसेल्फ, और मे बी हमारे पेट्रोल के प्राइसेस क्या होंगे या डीजल के प्राइसेस क्या होंगे, उस वजह से रुपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट commodity from a geopolitical perspective, from an economic perspective, from the currency perspective. So we need to understand this कि इसका outlook क्या है going forward. Well, fundamentally recently किशोर सर का सेशन था जहाँ पर उन्होंने फंडामेंटल्स कवर किए थे। तो ये उन्होंने बताया था कि रशिया, ओपेक और इसमें मेनली सऊदी अरेबिया एंड यूएस, इनके बीच में नेगोशिएशंस चल रही है कि करंट जो सप्लाई ग्लट है, काफी ज्यादा सप्लाई हो गया है। करंट जो सिनेरियो है उसमें सप्लाई बहुत है एंड डिमांड बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। बिल्कुल नहीं का मतलब है कि लगभग एस्टिमेट्स है कि 15 से 20% इम्पैक्ट आया है जहां तक डिमांड का सवाल है। तो 20% डिमांड रिडक्शन इन अ कमोडिटी इज क्वाइट ह्यूज, बहुत बड़ी चीज है। तो एक डिमांड और सप्लाई शॉक दोनों एक साथ में आया है, विच इज अ वेरी रेयर सिनेरियो फॉर क्रूड। और इसीलिए हमने देखा है कि जैसे आप चार्ट पे देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप $65 से लगभग हमने $19.8 तक के लो, वर्चुअली $20 तक के लो हमने WTI क्रूड में देखे हैं। सो WTI क्रूड इज बेसिकली नाइमेक्स में ट्रेड होता है, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, जैसे गोल्ड कॉमेक्स में ट्रेड होता है, इट्स ऑल्सो यूएस बेस्ड एक्सचेंज। Similarly, NYMEX is a division of the CME group. तो वहाँ पर ट्रेड होता है। The most heavily traded commodity in the world, right? And every millisecond there's a trade going on in crude oil. तो काफी heavy काउंटर है जहाँ पर ट्रेड होता है, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं होती है। एंड इसका व्यू ये है गोइंग फॉरवर्ड दैट जैसे हम देख रहे हैं कि $20 से there has been some recovery. We are currently trading, yesterday's closing was around $24, but today we are trading around $26. तो बॉटम से ऑलमोस्ट 30% की रिकवरी आई है। देखिए ये ध्यान रखिए कि ऑलमोस्ट हर 20 सेंट 1% हो जाता है। तो 20 सेंट्स मीन्स अपने जैसे अगर आप $1 बोले तो $1 के बराबर होगा, तो 20 सेंट्स मीन्स 20 पैसे। सो एवरी 20 सेंट्स मूव ओवर हियर इज अ 1% मूव नाउ, राइट? तो आपको हर रोज
अपर सर्किट या लोअर सर्किट दिखेगा, क्योंकि एवरेज पे इसमें जो मूव होता है वो 7 से 8% मूव हो रहा है आज के दौर में, और कभी कभी 25% भी मूव हो जाता है 1 से 2 दिनों में. सो इट्स क्वाइट नॉर्मल because the price itself is very low. We are as you can see here, we are trading at multi year lows. इतने प्राइस लेवल मैंने अपने करियर के बिगनिंग से कभी देखे नहीं है, बिकॉज यू नो इट्स बीन 15 years in the industry. बट इतने टाइम में $20 नहीं देखे थे. हाँ, $26 जरूर देखे थे, बट उसके बाद प्राइसेस हर बार बाउंस बैक होती थी. जैसे अब यहाँ से देख रहे हैं कि यू नो $32 से बड़ा बाउंस बैक आया था, फिर $26 से आया था. बट दिस इज बीन अ बिग कट because the supply and demand scenario both are very negative. Technically, the structure has become bad when it broke support at $42.50. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सपोर्ट हुआ करता था 42.50. तो अब going forward, this itself is a resistance now. It's a good resistance. As long as below the same, selling would continue from a larger angle. Very short term basis, however, there's a possibility कि आज हम $26 पे हैं. अगर you know there's a meeting which is scheduled between OPEC, Russia and US. तो कोई अगर अग्रीमेंट हो जाती है जहां पर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोडक्शन कट करना है, तो कितना कट करना है, कौन कौन कट करेगा, यानी सप्लाई कौन कट करेगा, ये उससे डिपेंड करेगा कि प्राइसेस का नियर टर्म कितना उछाल आएगा. सो टेक्निकली it seems that the market is poised for an upside move. ऐसा लग रहा है कि एक upside move आना चाहिए, because $20 एक intermediate support है जो recent low है. बट वो extent कितना होगा वो fundamentally decide होगा. वो extent हो सकता है between $29 to maybe $33 to $34 as well. So यहाँ हम देख रहे हैं कि intermediate बड़ा resistance on a monthly closing basis $33 to $35 रहा है, जहां पर प्राइसेस पहले 33 में टेस्ट किए थे, वहां से रैली हुए थे. $26 आने के बाद भी मंथली क्लोजिंग बेसिस 33 के आसपास हुए थे, एंड देन वी रैली स्टार्टेड टू रैली. सो दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेवल फ्रॉम अ मंथली क्लोजिंग बेसिस. तो हो सकता है कि ये अगर ये लेवल पार नहीं हुआ तो we might again see a drop in prices, and that's the view actually, कि we expect it to rise possibly to between 29 to maybe $33, which is still a good move on the upside, but it might not hold on to the gains. और फिर उसके बाद जो फॉल आएगा वो उसे $20 के नीचे लेके जा सकता है towards $15 to $16 range, and possibly towards $11 in an extreme case. So अगर हम इसको इक्विटी मार्केट से भी कोरिलेट करके देखें तो आज ग्लोबल इंडाइसेस में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा है, बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव है 25-30% का. बट द काइंड ऑफ फॉल वी हैव सीन, so the current move seems more of a recovery kind of move rather than a bullish move. Bottom is in place, ये बोलना बहुत जल्दी होगा because fundamentals are still not pretty good. GDP काफी sharply decline होने की possibilities है, global GDP. So this could impact equity market going forward, as also the demand for crude oil, because अब अगर आप sectors देखें तो tourism industry hit होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है जिसमें फ्यूल लगता है. अगर हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बंद है जिसमें अगेन डीजल की बहुत बड़ी मात्रा में यूज होती है. सो आई वुड से कि आने वाले एटलीस्ट 1 क्वार्टर तो क्रूड ऑयल का डिमांड काफी कम रहेगा, और अगर प्रोडक्शन कट्स होते भी हैं तो जो हमारे हिसाब से बहुत फंडामेंटली एंड टेक्निकली जो अपसाइड होगा वो कहीं ना कहीं लिमिट होगा. एंड इसमें तेजी शुरू होने के लिए मिनिमम $33-35 रेंज ब्रीच होना चाहिए. एंड एक्सट्रीम केस में जब ये $42 अगर ब्रेक कर देगा 42.5, तो आप समझ सकते हैं कि द बॉटम वुड बी इन प्लेस एंड वी वुड बी इन फॉर अ बिग राउंड ऑफ अपसाइड फ्रॉम देयर ऑन. बट as long as these resistances are held, it's still a sell on rallies kind of market. तो रैली आ सकती है, जिसे अभी अगर ट्रेड करना है तो you can do that. Futures and options both are available on the domestic market, so you can do that, but strict stop losses रखिए. Secondly, always be mindful कि it could turn. So what is the view on the domestic front? Obviously very similar to international market. यहाँ पर जो crude oil trade होता है वो रुपी टर्म्स में होता है. So we multiply the WTI price with the current rupee rate, और हमको जो फ्यूचर्स प्राइस है वो मिल जाता है. तो करंट रुपी रेट भी जो होता है वो भी फ्यूचर्स के हिसाब से ही होगा. तो INR फ्यूचर्स जो अगर आपके अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है तो अप्रैल के फ्यूचर्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको ये रेट मिल जाएगा. सो एज यू कैन सी हियर 1900 के आसपास कल का क्लोजिंग था, एंड टुडे इट्स ओपनड हायर बाय अबाउट 100 रुपीज. इट्स अराउंड 2020 और देयर अबाउट्स. तो परसेंटेज में काफी डिसेंट रिटर्न्स हुए हैं.
व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज सिमिलर टू WTI क्रूड, हम इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2100 जो एक इमीडिएट हर्डल है वो टेस्ट हो सकता है, फॉलोड बाय 2350। तो ये एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हर्डल है 2350 जो आने वाले कुछ समय में टेस्ट हो सकता है। बट अगर वो ब्रीच नहीं हुआ तो हम ये देख पाएंगे कि दोबारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। पहले टारगेट उसमें आपके 1800 के होंगे, फिर 1550 के होंगे, एंड देन इवेंचुअली we could also decline to 1200, which could correspond to about $15 on NYMEX. So as you can see here, जैसे $42.5 के डिक्लाइन हुए थे इंटरनेशनल मार्केट में, सिमिलरली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक दिया था प्राइसेस ने। तो ये जो है जनवरी का पीरियड है जहाँ पर 4600 के प्राइसेस लगे थे, जब ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जब उनके जनरल को असैसिनेट कर दिया गया था। बट उसके बाद जैसे ही जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम निकल गया, वी सॉ शार्प डिक्लाइन। उसके बाद में डिमांड डिस्ट्रक्शन होना चालू हुआ बिकॉज थोड़ा बहुत ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट था, एंड जो मेन फेब ऑनवर्ड्स जो डिमांड को हिट किया है वो चाइनीज डिमांड हिट हुई है। उसके बाद में हमने वर्चुअली एक नॉन स्टॉप रैली देखी, फॉल देखा है। जैसे आप देख रहे हैं वीकली चार्ट में कंसिस्टेंट वीक ऑन वीक बेसिस इट्स बीन मेकिंग न्यूअर लोज। Recently, it has halted a bit, 1550 रुपीस पर बैरल के आसपास जो प्राइसेस हैं कंसोलिडेट हुई हैं, वहां से रिकवरी आई है। We, as I mentioned earlier, we do expect this recovery to continue, but not hold for too long. Corresponding to $33-35, we have about 2800 mark on rupee terms, and उसके बाद अगर निकलता है तो there is a possibility कि इसमें तेजी जो है वो बिल्टअप हो जाएगी। बट जब तक 2800 के नीचे ब्रॉडली चल रहा है, एनी रैलीज वुड बी मेट विद रेजिस्टेंस। शॉर्ट लिव्ड हो सकती है, मे बी अ वीक और मे बी 2 weeks, बट आफ्टर दैट इट माइट स्टार्ट क्रैकिंग वंस अगेन। सो दैट वाज फॉर क्रूड। आई विल कंटिन्यू विद बेस मेटल्स पैक नाउ। सो बेस मेटल्स में ये वीकली चार्ट है डोमेस्टिक कॉपर प्राइसेस का। So those who are familiar with this, जो लोग ट्रेड करते हैं कॉपर में, उन्हें पता होगा what this is showing is the price it's showing is around 390 rupees per kg। तो 1 किलो कॉपर के दाम है 390 रुपए, right? We have seen a very good rally in the past 3 years, past 4 years almost। तो वहां से अराउंड 290s के बॉटम से जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 490 तक गई थी। बट सिंस द लास्ट 1.5 years we had seen some consolidation। हमने देखा था कि प्राइसेस 410 को एज अ डेली वीकली क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे थे। और अपसाइड में जैसे हमने सिल्वर में एक रेंज देखी थी 33,500 से अराउंड 50,000 की, बहुत बड़ी रेंज थी। सिमिलर अराउंड 15% रेंज हमने कॉपर में देखी थी, जहां पर ऑलमोस्ट एवरी 3 months एक 410 के सपोर्ट टेस्ट हो जाते थे, एंड देन 460 के रेजिस्टेंस भी टेस्ट होते थे। So this sort of formed a triangle, right? But after that triangle was taken off, as you can see here. So this is again around the same period, Jan Feb March period। Jan Feb period में हमने देखा कि breakdown दिया है, and on the weekly chart in a single week or in a 2-week period we saw about a 90 rupees fall। So 420 से हमने लगभग 335 के लोज आते हुए देखे, तो 85 रुपीस के वर्चुअल एक बड़ा सा डिक्लाइन देखा। In percentage terms, that was a huge fall, about a 20%, 22% decline in 2 weeks. Since then, we have recovered. तो हमने ये देखा है तब से कि चॉपी रहा है मार्केट। It's been trading between 390 and 360 for a while, but as of now, weekly closing basis 360 को मार्केट कहीं ना कहीं एक होल्ड कर पा रहा है और ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है। बट देन अगेन आई वुड से दैट जब तक 410 के ऊपर ये प्राइसेस नहीं निकलती, जो ट्रेंड रहेगा वीक रहेगा। सो विच मीन्स दैट वी कुड एज अप सम मोर। हम लोग ये हो सकता है कि 390 91 से एक बार शायद 400 आ जाए या 405 तक भी आ जाए। बट इफ यू फेल टू ब्रीच 410 ऑन द अपसाइड, द डाउनसाइड कुड रिज्यूम अगेन, एंड पहला आपका जो टारगेट होगा वो 360 होगा, followed by 335, which is a major support as can be seen from the chart। So पहले एक resistance band हुआ करता था 360 and 335, अभी एक support band है from a weekly closing basis। So the bias does look negative। Just to tell you, 410 के ऊपर अगर ये weekly closing basis sustain हो गया तो possible है कि ये जो bottom है that would be in place,
and we might again start a rally to the upside. So copper has had a history of huge declines and then a consolidation phase, but then जब इसमें recovery भी आती है तो काफी sharp recovery आती है, as can be seen from the chart over here, कि 300 से 400 का जो जोन है ऑलमोस्ट एक महीने में यानी 4 वीक्स के अंदर अंदर आ गया था, तो इट रैलीड बाय अबाउट 33% in about a week's time. So and then it consolidates in a band and then shifts a band again. So this is how it moves, right? But as of now the view remains negative. Let us come to zinc now, which is the other big base metal जिसके बारे में काफी queries आती हैं. So we have zinc mini, actually mini contract है. The mega one will be launched very soon once again. तो कुछ समय पहले तक मिनी और मेगा दोनों ट्रेड हुआ करते थे, बट एज ऑफ नाउ जिंक मिनी है और बहुत ही जल्द जिंक आ जाएगा दोबारा. सो व्हाट बट द प्राइसेस आर सेम, प्राइसेस दोनों की सेम है. तो विल स्टडी जिंक चार्ट इटसेल्फ. तो जैसे हम देखें कि यहाँ पर 2000 अगेन दिस इज अ वीकली चार्ट, अ वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट. तो ये जो लेवल्स हमें देखने मिले थे ये काफी पहले के लोज हैं. हमने इनफैक्ट जिंक को 2008 के रिसेशन में जो ग्लोबल रिसेशन था उसमें 40 तक के लोस को छूते हुए देखा था. तो 40 से हमने काफी बढ़िया रिकवरी दिखाई प्राइसेस ने, और रिसेंट लोज 97 के थे, वहां से 231 तक रैली हुआ नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट. आई वुड से देयर वाज अ गैप इन बिटवीन, बट आफ्टर दैट इट वाज वन वे रैली फ्रॉम 150 टू 231. फंडामेंटल्स उस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो स्टील का डिमांड है वो हिट हुआ है. बेस मेटल्स का इन जनरल जो डिमांड है वो हिट हुआ है. जिंक इज यूज्ड टू मेक स्टील स्ट्रॉन्गर, गैल्वेनाइज स्टील, उसको गैल्वेनाइज करने के लिए यूज होता है स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए. तो और एंटी रस्ट कोटिंग भी होती है. तो ये चीजें हैं जो जिंक यूजफुल होता है इंडस्ट्री में. तो अगर ऑब्वियसली चाइना की फैक्ट्री शट है, अगर जो मोटर व्हीकल्स का डिमांड है वो स्लो डाउन हुआ है, तो स्टील डिमांड इज हिट बिकॉज ऑफ दैट. फैब्रिकेशन की वजह से जो डिमांड है वो हिट हुआ है. तो जिंक डिमांड विल आल्सो बी हिट बिकॉज ऑफ दैट. और ये हमने अगेन इस पीरियड से देखा कि जैन फेब पीरियड में हमने डिक्लाइन देखी थी, जहां पर 196 के हाई से वर्चुअली एक नॉनस्टॉप डिक्लाइन हमने 123 विच आर लाइक मल्टी ईयर लोज वो हमने टेस्ट होते देखे थे. उसके बाद उसी वीक में एक रिकवरी है. The price has been gyrating between 152 and 133 in the short term. तो ये काफी बड़ा रेंज है, अबाउट 15% रेंज हो गया या 12% रेंज है, बट दैट्स द केस. रिसेंट जो ट्रेडिंग है वो हायर एंड ऑफ द रेंज की तरफ हो रही है, कि हम देख रहे हैं कि 133 से भी जो रिकवरीज आ रही हैं तो 150 के तरफ रेजिस्टेंस टेस्ट करके फिर 145 पे आके इवेंचुअली मार्केट क्लोज दे रहा है. सो सम रेजिलियंस इज बीइंग सीन, but as of now very similar to copper we perceive that ये एक short covering move है rather than a full fledged rally. तो full fledged rally हम तभी देखेंगे जब ये प्राइसेस दोबारा 165 के ऊपर वीकली क्लोज देने में कामयाब हो जाएगी. अदरवाइज जैसे आप देख रहे हैं टेक्निकली एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है. हम मोमेंटम इंडिकेटर्स भी देखें, चाहे वो कॉपर हो या जिंक हो. कॉपर में भी हम देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर्स नेगेटिव ही है, और अभी भी इनमें जो गैप है बिटवीन द सिग्नल लाइन एंड द एमएसीडी वो काफी ज्यादा है. तो वो कवर होना पड़ेगा पहले, और वो तब कवर होगा जब प्राइसेस 410 के ऊपर कॉपर में जाएगी. सिमिलरली हम जिंक में देखेंगे कि अगर प्राइसेस 165 के ऊपर जाने में कामयाब होती है तो ही विल बी गेटिंग अ कट from lower side, the signal line, the MACD will cut the signal line from below, and तेजी की शुरुआत हो सकेगी, जैसे हमने यहाँ देखा था कि जब MACD ने सिग्नल लाइन को नीचे से कट किया तो एक तेजी की शुरुआत हुई, और मिनिमम जो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं वो 10 to 12% रैली इंस्टेंटली हमें देखने मिलती है. सो दैट्स द जनरल नॉर्म, बट एज ऑफ नाउ जो गैप है वो मेंटेन्ड है, so the direction could still be on the downside. And mind you 152 is an immediate hurdle as well. तो पहला हर्डल भी अभी भी नहीं निकला है. अगर वो निकलता है तो आप शॉर्ट टर्म बाइंग कर सकते हैं 165 के लिए, और पोजिशनल बाइंग 165 के ऊपर ही होगी. unless and until that is being held, it will be a sell on rallies candidate. downside supports 133 134 जो चार्ट पे मेंशन नहीं है, but this is the level which I'm mentioning, 133 134, and below that 123 would be the eventual target, यानी दोबारा prices lows को retest कर सकती है. So I think this was the presentation from my side. So
जस्ट टू समराइज अ बिट, मैं फिर से एक बार अगर समराइज करूं तो गोल्ड वी आर बुलिश, तो आप मार्केट पे भी ले सकते हैं. करंट मार्केट इज आल्सो लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर अ बाय. इमीडिएट टारगेट ऑफ 46,200, 1 month perspective of 47,000, 47,200 odd. So that is also pretty good, a pretty good target from here on. तो आप वो ले सकते हैं लगभग यू नो 15% के आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं करंट मार्केट से. देन वी आर कमिंग टू स्पॉट गोल्ड 1880 में, जैसे मैंने डिस्कस किया, वो कर सकते हैं. सिमिलरली सिल्वर में $16.5 is an immediate objective which is still $1 away from here, about 8% from here, so you can buy that as well. Similarly silver जो है M6 silver, domestic silver 46,000 I would say is the immediate target, because कहीं ना कहीं रुपये भी depreciate हो रहा है या एक हायर रेंज में ट्रेड कर रहा है, so that is likely to support the rally in both gold and silver. And eventual 1 year target of 50,000 in silver. Spot gold and silver ratio again, we prefer to go long more on gold. दोनों पे आप long जा सकते हैं, but we would like to prefer gold more as of now. Crude oil, I'll be taking up the questions whatever you have, but just to summarize, crude oil again, a short term relief rally could be seen, but we are negative on crude oil from a medium term perspective on both domestic and international counters. Base metals, last but not the least, 410 immediate stiff resistance for copper, 165 for zinc. As long as below these levels, the recent lows could be retested. So 360 for copper and followed by 335, and 133 and 123 for zinc. ये दो जो targets हैं वो लिए जा सकते हैं. So now I will open the floor for questions. I believe a lot many questions are already there. So I'll just try to answer them one by one, right? Okay, so I'll need to check from the start. Before the webinar started, actually there was an interesting question from Mr. Jitendra Jain. उनका question था कि I want to inquire about the difference in crude contracts. How can we carry long positions and this widening gap? How to deal with it? देखिए, obviously this happens, ये होता है हर बार जब भी क्रूड इतने लोस पे आ जाता है, यानी मल्टी ईयर लोस पे, 4-5 ईयर लोस, तो हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी काफी परसेंटेज गैप जो होता है वो 15-20, 2008 में आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट वाज क्लोज टू अराउंड 40-45%, तो काफी एक बड़ा गैप था उस टाइम पे. फिलहाल जो है अराउंड 300-320 और रुपीस का गैप है, विच इज स्टिल क्वाइट ह्यूज. तो इट इज डिफिकल्ट टू गो लॉन्ग. फिजिकल मार्केट में जो कॉमिक्स में जो डिलीवरी लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिलीवरी नहीं है, तो दोज आर टेकिंग डिलीवरी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है. बट जो फ्यूचर्स मार्केट में करना चाहते हैं, दे फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. नियर मंथ में अगर आप करें तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द रैलीज, बट रोल ओवर करना डिफिकल्ट है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आप समझ लीजिए 2200 पे आपने करंट मंथ चल रहा है, नेक्स्ट वाला 2500 के करीब है, आपने रोल ओवर कर लिया और नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट 2600 जाके फिर उतारना चालू कर दे क्योंकि 2800 का रेजिस्टेंस है. सो यू विल बी स्टक प्रीटी बैडली, और हो सकता है कि वो नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1600 आ जाए. तो यस, इट इज डिफिकल्ट. व्हाट वी एडवाइज इज कि यू कैन डू इट थ्रू ऑप्शंस, यानी एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करके आप ट्रेड कर सकते हैं. सेकेंडली, जितना हो सके नियर मंथ में कीजिए बाय के लिए ट्रेडिंग. जो शॉर्ट है, जिनको इन लेवल पे शॉर्ट करना है, उनके लिए काफी एक एडवांटेज हो जाता है क्योंकि उनको नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी प्रीमियम पे मिलता है. तो यस, it's not too good for those who are looking for a buy, right? Then the next question. So this was an interesting question which came at the beginning of the seminar itself. That's why I took it up. Yeah. How will Corona? There's a question. How will Corona pandemic affect prices? It's already impacted the prices to a very large extent. As I told you, जब मैं कवर कर रहा था मैंने बताया कि जब कोरोना का इम्पैक्ट चाइना में ही देखने मिला एंड यूएस में केसेस जस्ट बिगिन हुए थे, तब से ही बेस मेटल्स में, क्रूड ऑयल में काफी शार्प सेल ऑफ देखने मिला.
this was crude oil specifically was aggravated because जो OPEC plus का मीटिंग था, दैट इज OPEC सऊदी अरेबिया और OPEC कंट्रीज और रशिया के बीच जो मीटिंग था वो फेल हुआ, जिसके बाद रशिया सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर किया कि दे आर गोइंग टू रैंप अप देयर प्रोडक्शन प्रीटी मच, लगभग 20-25% इंक्रीज करेंगे फ्रॉम अबाउट 9 लाख बैरल्स पर डे टू अबाउट 12 lakh barrels per day, 12 million barrels per day, तो 3 लाख बैरल से वो लोग इंक्रीज करेंगे। तो उसके बाद में जो इंक्रीज हुआ, जो रिडक्शन आया प्राइस में वो ज्यादा एग्रेवेटेड था। इसके लिए मैंने आपको चार्ट बताते वक्त ये बोला कि इट्स बोथ अ सप्लाई शॉक एंड अ डिमांड शॉक। So corona is definitely impacting the prices because people are anticipating a sharp GDP decline, sharp manufacturing decline, and that too it's a long lasting impact, maybe at least 1 quarter, right? तो एक क्वार्टर जैन फेब मार्च का जो बाकी के डेवलप कंट्रीज है वहां पर ऑलरेडी हो चुका है, जिनका फाइनेंशियल ईयर इज द सेम एज कैलेंडर ईयर। तो मैं एक और क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून की बात कर रहा हूँ। सो फॉर द डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक जापान, यूके, यूएस, उनका ऑलमोस्ट वर्चुअली पहले जो 2 क्वार्टर्स हैं वो नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं, यानी रिसेशन की पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज बीइंग सीन ऑन प्राइसेस। और आगे चल के क्योंकि ये इम्पैक्ट और रहेगा, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड के प्राइसेस में और डिक्लाइन आ सकता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है और कॉपर के भी और जिंक के भी टेक्निकल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, विच इज गोइंग टू इनफैक्ट अफेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पॉजिटिवली। तो गोल्ड प्राइसेस पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे एंड एट द सेम टाइम जो रिस्कियर एसेट्स हैं जैसे बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल वो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। सो देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ इम्पैक्ट। Yeah, please send your PPT. Okay, yes, definitely we are recording the session. So why does lower crude price not good for the economy? See, I did not say lower crude prices are not good for the economy. When crude prices are falling because of a shock, a demand shock, it indicates that things are not too good with the economy. वो बताता है कि इकोनॉमिक जो एक डिमांड है इंडस्ट्री से वो काफी स्लाइड हुई है। इसलिए शॉर्ट टर्म बेसिस स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है शेयर मार्केट में क्रूड प्राइसेस जब गिर रहे हैं, जबकि एक्चुअली स्पीकिंग, आइडियली स्पीकिंग, जब क्रूड प्राइसेस लोअर होते हैं तो इट शुड बी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट समवेयर। बट शॉर्ट टर्म बेसिस सारे एसेट क्लासेस एक साथ में गिरते हैं बिकॉज देयर इज अ सडन शॉक, देयर इज अ सडन सेंटिमेंट व्हिच इंपैक्ट्स द मार्केट ऑल ऑफ अ सडन। सो दैट इज व्हाई। बट यस, अगर क्रूड प्राइसेस थ्रू आउट द ईयर ऑन एन एवरेज $30 to $35 रहते हैं, which we expect at least to stay in the next 6 months from here on, कि अक्टूबर तक तो एटलीस्ट जो आपका एवरेज प्राइसेस रहेंगे वो $30 से ज्यादा नहीं रहेंगे। सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी, फॉर द इंडियन इकोनॉमी। एटलीस्ट एक बफर मिलेगा उस वजह से, राइट? सो यस, फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, falling crude prices or lower crude prices in general, average lower crude prices would be better. But जब फिलहाल जब मार्केट गिरते हैं, as of now जो सेंटिमेंट नेगेटिव है, that impacts even the stock market, even the Indian stock markets. You recommend shares for 2 years? I don't personally recommend shares because that's not my area of expertise. So we do have, every day we have sessions on equities as well. So sir, please, you can ask a question in that forum. Copper may move further. Yes, it will move obviously somewhere. And as we mentioned that, short term basis, it might move a bit higher because markets are recovering. लेकिन अपसाइड जैसे बताया गया है कि लिमिटेड हो सकता है एंड वीकली क्लोज जरूरी है 410 के ऊपर फॉर फर्दर गेन्स, अदरवाइज वी माइट इजीली सी अ सेल ऑफ इन द कमिंग few weeks. Will the PPT be shared? Yes sir, the PPT will be shared with you again. How to read crude chart? Well, that's an in-depth study which we do, so I cannot teach you on this forum. Maybe whenever there's a separate session for purely teaching technicals, we can cover that. But I think there are a lot many books which you can read, starting with basics of technical analysis. There's a lot of there's a book by Mr. Martin Pring, so you can read that. Candlesticks Explained is one other book which you can read, so I think I can suggest you that.
targets for natural gas. I did not cover natural gas right now, but I think we have seen a recovery and a fall, and a recovery and a fall. So it's been trading in a very big range, natural gas, that is in the past 2 months, wherein the lower side is held around 118,120, and the upside is capped around 150, 152 levels. So today as well we saw a gap down opening in natural gas after a very good rally yesterday. So what we believe is that this range will persist, and अगर 150 से 152 की रेंज नहीं निकल पाती, सो तब तक जो इसका ट्रेंड रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा in sync with crude oil, and we could see a retest of the 120 118 odd mark. और अगर उस लेवल को भी निकाल देता है तो 104 could be the next big target. Fundamentally जो सीजन है नेचुरल गैस का, there's some reports की फिलहाल जो विंटर तो खत्म हो गई, but there was severe weather over there, कोल्ड वेदर, तो उस वजह से स्पाइक आया था. बट नाउ वी आर एंटरिंग अ लीन सीजन फॉर नेचुरल गैस डिमांड, तो हो सकता है कि आगे जो प्राइसेस हैं वो सबड्यूड रहेंगे. If I want to learn basics of commodity, what should I refer? Good question, Mr. Akshay Shelke. I think you can refer our reports. We come out with a many report every week virtually, और हमारा वीकली रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें काफ़ी कुछ कवर होता है. मंथली रिपोर्ट्स आते हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स आते हैं, technically भी cover होते हैं. So we have pathfinder reports which we come out with. Then there are there are other reports which we come out with which are special reports, right? So recently we came out with a crude oil report जहाँ बताया गया कि क्रूड के आगे आने वाले डिमांड सप्लाई इक्वेशन कैसी है और प्राइसेस का क्या हो सकता है, जिसमें एक बेरिश आउटलुक था ऑब्वियसली. सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. आपको धीरे धीरे नेक्स्ट 2 या 3 महीनों में एक ग्रिप आना शुरू हो जाएगी. Sir, any strategy for silver long? Yes, yeah, as I said that you can go long even at market. Actually, you can go long. We are close to 43,000 levels. Immediate target I foresee is close to 44.5. So you can buy silver even now. If you want a smaller stop loss, it could be somewhere in the region of 42,400 or thereabout. उसके नीचे जाता है तो exit हो जाइए. Otherwise, shouldn't be an issue. अपसाइड में 44.5 के टारगेट ले सकते हैं. सिमिलरली गोल्ड में एज आई मेंशन्ड वी हैव सीन अ 5 सेशन कंसोलिडेशन जहां पर प्राइसेस 44,700 को होल्ड कर रही हैं. वी ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइज, बट आई फोरसी कि आने वाले कुछ सेशंस में 46,200 का एक इमीडिएट टारगेट दिख सकता है, फॉलोड बाय 47,000. देयर वाज आल्सो वन क्वेश्चन अर्लियर कि जो रोल ओवर प्रीमियम है वो ऑलरेडी काफी हाई है, तो 48,000 50,000 जो टारगेट्स हैं वो तो इमीडिएटली आ जाएंगे. सो पॉइंट इज सर कि मार्केट इज मूविंग सो रैपिडली नाउ कि जो आप करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसमें ही 3 या 4 हजार रुपए के मूव्स हो जाते हैं. सो इट माइट बी पॉसिबल, जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि 47,000 47,200 माइट बी द फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ पर्सपेक्टिव इटसेल्फ. सो वी हैव द जून कॉन्ट्रैक्ट रनिंग, क्योंकि इसमें बाय मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो जून कॉन्ट्रैक्ट है तो जून एक्सपायरी में भी काफी टाइम है. मई का पूरा महीना है एंड 5th of June को एक्सपायरी है. सो यू कैन बाय दैट, कीप इट. यहाँ से इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 2,000 रुपीज की इमीडिएट रैली यानी 5% रैली आपको काफी जल्द 1 महीने के अंदर ही दिख जाएगी. सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट रोलिंग ओवर एज सच. या एंड वन गुड पॉइंट फ्रॉम दिस इज दैट 1880 से कॉरेस्पॉन्डिंग जो टारगेट है, मैं आपको पहले कवर नहीं किया था, वी आर लुकिंग एट 50,000 फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, राइट. सो 47,200 तक इमीडिएट है जो चार्ट में एक चैनल रेजिस्टेंस दिख रहा था, बट फ्रॉम अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव we are also aiming at 50,000, which will correspond with the $1880 which we discussed earlier, right? So this is ये target जो है वो 50,000 से correspond करेगा. एक और चीज है इसमें कि बहुत टाइम जो प्रीमियम्स है वो डिस्काउंट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. So it's not necessary that the market will always remain at a premium. When the market rallies a lot, यानी समझ लीजिए अगर 2-3 दिनों में इसमें 500-600 पॉइंट की रैली आ गई, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है या सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है. सो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस. हाउ कैन वी ट्रेड इंट्राडे? वेल, यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो द कॉल्स, ऑल द कॉल्स व्हिच वी गिव इन गोल्ड और एनी अदर काउंटर. सो दैट इज वन थिंग. they are pretty experienced team in commodities, so they will be guiding you. और advisors के थ्रू भी आप टच में रहिए, because they are very much informed. हमारे 3 या 4 बार दिन में कॉन कॉल्स होते हैं, इंटरेक्शंस होती है, so they can update you what is happening on an intraday basis from a regular perspective. So yeah, silver long strategy I've already covered. And what is the best strategy to trade in crude? Well, short term basis it seems that we are headed higher.
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज जो है एक मीटिंग है एंड ओवर कल बंद है, तो ओवर द वीकेंड विल कम टू नो कि क्या रिजल्ट आए। बट देन मार्केट इज होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी कम होगी, जो एक्सेस सप्लाई है वो कम होगी, यानी प्रोडक्शन कट्स होंगे बाय सऊदी अरेबिया, रशिया एंड पार्ट्स ऑफ यूएस आल्सो, टेक्सास एंड अदर शेल प्रोड्यूसिंग रीजन्स। तो वो एक कारण है जिस वजह से आज हमने क्रूड को ऊपर देखा है, और हो सकता है आने वाले 4 सेशंस में एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखे। बट माइंड यू, जैसे हमने पहले बताया कि इसका पोजिशनल एंगल से it's way too early to call a bottom. We could be headed for further lows. How much government has saved from crude? To what extent will it help government to curb trade and fiscal deficit? Well, yes, it's a good question actually, and the quantum I would be, the figures are not handy with me right now, but I would say that every dollar, every $10 change leads to about 10,000 crores or so of a saving. So you can think on those lines, because excise duty has been increased and the prices haven't reduced, because if there's been a big fall in crude prices. So they were about $65 per barrel in January beginning. And at that time, the fuel prices for petrol, for example, were 80, and we have virtually one third of that right now. But still, the fuel prices are almost similar. So you can calculate, what kind of gains the government would be making. So this would actually help us to fulfill our fiscal deficit target to an extent, because we were very short of the privatization or the private placement targets. So disinvestment targets, sorry. So this could help us, help the government to a very large extent, because फेब और मार्च दोनों महीनों में काफी एक भारी गिरावट देखने मिली थी क्रूड में. सो इट इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू एन एक्सटेंट. Could we hold silver longs for 60,000? Yes, you can. That would be an extreme case target which I just discussed. जैसे मैंने आपको बताया था कि 50,000 के ऊपर जब प्राइसेस निकलेगी, तो there's a possibility कि we might go to 63,000 or thereabouts, क्योंकि वो एक डबल बॉटम ब्रेकआउट होगा, which will target about 63 or 64,000 from there on. But as of now वो व्यू नहीं है. So conservative target is 50,000. But if you can keep a stop on a daily closing basis or a weekly closing bill basis below 33,500, then you can also go for the larger target, which is 60,000. Can recession lead to a silver fall? No, we have hardly seen that actually, because gold and silver both rally. Yes, what recession does is कि silver relatively थोड़ा कम rally होता है, because silver is derived from both gold mines and as well as base metals mines. तो सिल्वर की स्टैंड अलोन माइंस कम होती है. जब आप जो जो खदानें होती हैं, जो माइंस होती है, वो कम होती है. तो जब आप जिंक निकालते हो या कॉपर निकालते हो और गोल्ड निकालते हो, तो साथ में उसमें सिल्वर की मात्रा भी होती है. तो अगर आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो कॉपर और जिंक, तो सिल्वर की प्राइसेस को उससे इम्पैक्ट होता है. और कॉपर जिंक क्यों कम प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि उसका डिमांड गिर रहा है. राइट. सो फॉल इन कॉपर एंड जिंक प्राइसेस डज इम्पैक्ट सिल्वर. इसलिए हम देख रहे हैं कि सिल्वर इज लैगिंग गोल्ड, इट्स नॉट लीडिंग गोल्ड. बट जब कॉपर प्राइसेस बॉटम आउट होने लगेंगी, व्हेन दे विल बी क्लोज टू बॉटम, या ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर 410 के ऊपर निकलता है, जिंक 165 के ऊपर निकल जाता है, देन सिल्वर माइट जस्ट आउटपेस गोल्ड, और तब हम देखेंगे कि silver will rally much farther than gold as well. But as of now, it will not fall, but the pace of going up will be limited. Crude oil manufacturing cost is near to crude. Mr. Firoz Khoja is asking this. Price today will be sustainable, or manufacturer will need to cut or stop production? Please throw some light. Yeah, it's a good question. See, we have already seen, and there are already reports by various agencies which are tracking crude oil from a फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, और जो ग्राउंड पे स्टडी करते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी देखा है कि वहां पर कि खास करके यूएस में, क्योंकि यूएस में जो शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनका कॉस्ट बहुत हाई है. $40, $45 एवरेज कॉस्ट है, या जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं नया बैरल प्रोड्यूस करने के लिए. सो ये इनके लिए दिक्कत आ सकती है. दे माइट फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग that those who are tracking crude oil from at the ground level, कि anywhere between 2 to 4 million barrels might get impacted from US, and US currently produces about 13 million barrels per day. So आप समझ सकते हैं कि अगर 2 से 4 मिलियन बैरल कम होते हैं, तो that will be about almost 20 to 30% of its production. So yes, there will be an impact,
but larger producers like Saudi Arabia and Russia will not be much impacted because उनके जो oil wells हैं वो कुछ oil wells $6 or $8 के भी हैं, so they might continue to produce crude oil at a very large scale. Yeah, why is there a contango in crude oil? Because sir मैं पहले आंसर कर चुका हूँ कि क्योंकि बहुत रॉक बॉटम पे है तो एवरीबॉडी विल बी लुकिंग टू बाय, तो आपको एक हेफ्टी प्रीमियम देना होगा बाय करने के लिए, सेलर को इस लेवल पे एक प्रीमियम मिलता है, उसको एक एडवांटेज मिलता है. So that's the normal thing which the market which happens in markets. You can go to 2008 also. मुझे याद है कि जब प्राइसेस 1800 थी तो नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट 2600 पे ट्रेड कर रहा था, so it was almost a 40% contango at that point of time. If crude oil come $100, $11, sorry, Bala is asking, Bala Mudaliyar is asking, then what will be the domestic price? It will be around 900 odd rupees. But that's a worst case scenario we're looking at. A base case we are looking at is $15, which is around 1200. So it could come to 1200. Please send the presentation soft copy. Yes, sir. You have already given your Gmail ID, so I'll forward the same. So can you please suggest any good site app for commodities? Well, our site itself is very good. It's very exhaustive. You can go through the reports, sir. Mr. Mohit Agarwal is asking, so you can go through our reports. Not able to answer on buying ETF. Okay, I might have missed your question. I think, sir, ETF in India is not a very efficient way of buying gold. Kishore sir and even before me, Mr. Navneet Damani, they have already answered these questions regarding to ETF in their respective webinars. It's not very efficient because there are costs involved. You can try Me Gold, which we provide. Also, sovereign gold bonds, there's a lock-in period of 5 years. So if you're looking at an immediate gain, I don't think you'll be able to get it through sovereign gold bonds immediately, because after 5 years, what might happen is कि prices 45 से 51,000 हो जाएगी and might be back to 42,000 after 5 years. So we don't have a 5-year view in gold as of now. It's just a 1-year perspective we are discussing. So gold bonds wouldn't be a very good idea. And I wouldn't tell you to buy around $1350. No, I'm telling you can buy at current levels. Immediate target being $1750 followed by $1880. So you can buy at market as well. Natural gas will see below 100. Don't expect it right now, but very close to 100 is expected. So yes, 104, 103 kind of levels could be seen. Where we get reports, I already answered that. Our website is there. Go to our website and research reports section. On that tab, you can click. So you'll get all the latest research reports, and also historic reports will be there. So what is the view on guar seed? Well, I have not covered guar seed here, but maybe I know the answer, so I can cover that. We've already seen a big fall in guar seed from 5,000 levels to 3,500, but I think we could be heading towards 2,800 odd levels. So there's still some downside to go. Can I start SIP in Government of India? No, we wouldn't recommend that actually, because there's a lock-in, so we don't recommend. I think you can go for either the futures contract, or you can buy Me Gold, which is a very efficient way of doing it. It's available 24/7 on our app, so you can buy the Me Gold as such. In position, okay, Mr. Sriji is asking, in position exit from crude today or wait till Monday. If we wait, premium also go down. I think you are long on crude. So what I would say is you can wait for the next 2 hours at least. We might get a better price. So if you want to book it around 2,100 or thereabouts, you can book it. If you're willing to take a chance on OPEC, you can do it through options. That is, you can buy a call option of 2,100 and hold it. If the view goes right and prices move higher, then we might see some good gains over there. What is the ideal price for to enter gold for 46K and eventual 47K? Well, 46,200. You can enter. As I said, I've been repeating this again. We have seen a 4 days consolidation. You can enter even now. If you want to keep a stop loss, 44,500 should suffice. Target being 46,200 and 47,000 eventually, right? But yeah, you can enter even now. Market only next 3 days. Okay, I think you're talking about crude expiry again. I think I've answered this question. Crude oil reports, I think we come up with some very good reports on crude oil, both fundamentally and technically. So I think you can go through the same on our website, right? Yeah, sending PPT, yes, we will send the PPT. If US versus China war will happen, no, war will not happen. Both are too much dependent on each other, right? Most of US production is in China factories.
So no, they will not go to war. So it's a hypothetical question. I'll not be answering that, or I actually have answered that. Right. Gold funds, one can invest since you bullish 1 year perspective. I think ETF, again, there's a charge, there's a 1% charge which is there, so that can take up some of it. As I've been mentioning, and even Kishore sir has covered it earlier, that there it's an ETF, so the prices don't change real time. So if you want pretty immediate exposure to gold, you can right now buy me gold, and it's for the next 5 years you can hold it in your demat form, because since even in funds, if you are doing, it's in a paper form itself, right? So you can, even on me gold front, which is the purest form of gold which you can have in India. It is guaranteed by MMTC PAM, which are the biggest refiners in India. So 999.9 purity gold is there. So I think me gold you can go ahead with. It will be in your demat form. Nobody will bother you for that for the next 5 years or so. You can do through this rather than the ETF route. Yeah, B Gold is offering at 4719. Well, we do have, first of all, it's a 999.9 purity. It's a purest form. So what you are looking at is not 995 quality or 22 karat gold or 18 karat gold. It's a purest form of gold. So if you convert the current price to the purest form, you'll get the same thing. So it's actually not costly. It's just the pure form of gold. That is why the rate is higher. Right, spot prices also never show you the price for 999 gold. It will always show you the price for 995 gold. Okay, Mr. Okay, somebody from Galaxy C9 Pro is questioning. I'm new to trading gold. How can I trade at Motilal? Well, you can trade through futures, or you can, if you want to invest, you can do it through Me Gold, as I've been mentioning. Futures, there's hardly any rollover right now because prices are trading at multi-year highs. So in fact, there is a discount sometimes. So you can buy, say, June futures. If you want to keep on holding, you can roll over to the August futures and then to October futures and so on. Yeah, you missed the first part, Mr. Sriji, missed the first part. Will I get the recording? Yes, we'll be getting the recording, sir. Please do drop your email ID. You'll be getting the same. Yes, yeah, there's a question by Ms. Neena Jain whether we'll be getting the same premium. Obviously, you'll be getting the same premium when you go to sell as well, because the same quality of gold. Only difference being between the bid and ask. So the selling prices will always be higher, and when then the buying price, there will be a slight difference over there. Also, when you buy, there will be GST which will be involved, right? So there will be a detailed presentation on Me Gold shortly. So maybe all of your questions could be answered over there. Anything related to the current presentation, I would be happy to answer more. Okay, so I'm getting email IDs. Yes, so the presentation will be mailed. Any other questions before we wrap up? So please give me a hint on silver movement today. Well, it looks likely that we are headed for further highs. 43,600 is an immediate target which we might be looking at. So if you want to buy for the next 2 hours, you can buy it. Might get a better level from towards closing. Yeah. Yeah. So I'm getting all the email responses. Can we buy silver 1 kg? Yes, obviously you can buy silver 1 kg any contract you want, because there are silver minis and the silver regular one is also there. So if you talk about the lot size, and the regular one is 30 kgs, but it's quoted per kg only. So the price is per kg. Please arrange webinar for new traders, sir. This is already for those who are new to the market as well. So we expected that all of you might not be experienced traders. A bit of sophistication was required to understand this, but I think we might be, we will keep on holding such seminars in future, as such webinars in future as well. So please do join us for future webinars as well. I want your currency webinar. Okay, sir, please drop your email ID. We'll definitely mail you the currency fundamental and technical webinar for your reference. Sir, can we buy silver 1 kg in physical mode? Yes, you can obviously buy silver 1 kg in physical mode, but I think then again, it's not a very efficient way of buying. You can go through the futures route as of now, because not many ETFs are active also. So that's the only possible way of buying a silver in the paper, on the paper side, or you can buy physical silver.
1 kg, but that's not very efficient. Okay, so we have got the email IDs, and I think if there are no further questions, then we could wrap up. There are a few questions coming. I'll just check again, and yeah, just maybe I'll just take 2 or 3 more questions before wrap up. Can we expect one more round of liquidation in gold positions? I think we have already seen quite a big liquidation. हमने देखा है कि काफी बड़ी fall आई थी. It was a big fall, so as of now we don't expect. I think initially $1750 आके हो सकता है कि वो नीचे आ जाए. So initially we expect $100 move from here, and then that consolidation could come in. Copper M6 31st March low was 305. Is it correct? No, it's a wrong data. It did not touch 305. 335 was the low. What is margin in gold? Well, the margin has increased a bit right now. Ideally, it used to be between 1,50,000 or thereabout, but it's been increased a bit as of now. We'll just be sending you the margin file, the latest margin file for you, right? But I think it's about more than 25% right now. So it's increased because of higher volatility. Bought crude at 2070. I would say that you can hold on, but there's a risk. There's a risk of the meeting. So if you can just buy a put option and hold this, you can hedge your position through put option. That would be better. If you're getting profits, maybe you can just trail your stop loss and keep it. Or if you want to keep it without any stop losses, then maybe just buy a put option, because downside would then be curtailed, and any upside move you'll get the benefit of it. Right. So since there's an event, I would advise you कि आप option लेके करें. Yeah, how to get margin amounts? You can obviously request your advisor to forward you the margin file every day. They get the margin files with the latest updates, so that will help you to decide what are the margins. Or you can just ask your advisor the same. So I think I'll wrap up this session now, and whatever email IDs are there, we'll definitely be mailing you this presentation and the recording. So thank you for your patient listening, and we'll catch up again soon. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.